This call is now being recorded. Hi, hello students. In today's class, we are going to study about the chapter 3, unit 2nd. This is the chapter 3rd of the unit 2nd, and the name of the chapter is the population composition. As you know that we are studying about the population of the world in the human geography. So here in this chapter, we are going to study about the population composition, and in the population composition, we will be discussing about the various attributes or the various elements of the population, just like the male-female ratio means in the particular area or in the world, how many males are there, how many females are there, what is the educational status of the male and female, what is their मीन्स द एज कंपोजिशंस किस देश में कितने किस एज ग्रुप्स के अंदर कितने पॉपुलेशन है, तो इन चीजों के बारे में एंड मैनी सम अदर एस्पेक्ट्स आल्सो और सम अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशंस वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. This is the world population compositions of the earth, and now if we see here the people of we know that people of any country is have the diverse in many respects. The people are different from each other in many different aspects. It's not like that all the people of the country or the people of the area are same. They are different in the age groups, they are different in the sex, gender, they are different in their place of residence, just like the urban population, rural population. They are different. People have the different types of the occupations. People have the different types of the education and the life expectancies. So the people can be distinguished, means they can be identified separately by their age, by their sex, by their place of residence, and even by their education occupation also. So these are the some attributes of the population, and now in this chapter we are going to discuss about these attributes of the population. So now first the first attribute of the population is the sex composition. Sex composition means the number of the males and females in the particular country or the particular area, or we can say the ratio between the number of male and female is known as the sex composition of any country or any area. So the first topic we will be discussing about the sex composition, and this so number of male and female. See, number of male and female in the country is an important demographic character. It explains number of the male and female tells many things about the country. कई सारी चीजें जिनके बारे में number of males and females से पता चलता है, and it is the demographical characters. And what is the ratio between the number of men and women in the population is called sex ratio. Means the number of the male, means the ratio between the male, and means how many over the particular just like 1000 number is taken in the 1000 over the 1000 men how many women are there, or over the 1000 women how many मेन आर दियर. मतलब कोई भी एक नंबर को बेस ले लेते हैं, या तो मेन के नंबर को बेस मान लेते हैं या फीमेल के नंबर को बेस मान लेते हैं. इट इन सम कंट्रीज इट कैन बी टेकन द 100 and in some countries it is taken the 1000. So for example in India the base of the number is taken as the 1000. तो सेक्स रेशियो कैसे काउंट करेंगे? जैसे हमने 1 था किसी पर्टिकुलर एरिया के
1000 मेन को काउंट किया, उसी एरिया की 1000 फीमेल्स को काउंट किया। मीन्स उन्हीं फैमिलीज का या जो उसी एरिया की हमने 1000 मेन को काउंट करके उसी एरिया के हमने फीमेल्स को काउंट किया। तो जब उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको जब निकालते हैं, तो उस टोटल एरिया और उस एरिया का पता चल जाता है कि वहाँ पे 1000 के ब्लॉक्स में, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन, जो वहाँ का जो ये अपना ये आता है क्या, जो टोटल पॉपुलेशन आती है 10,000। अब 10,000 के अंदर आप मीन्स 5,500 तो मेन है एंड 5,000 सॉरी 4,500 वीमेन है। तो उसी के बेस पे हम उसको अगर इसको हम 1000 पे लेंगे तो 1000 पे 1000 मेन पे 950 फीमेल्स हो जाएगी। तो उसको निकालने के लिए ये किया जाता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया की मेल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय द फीमेल पॉपुलेशन। अलग अलग कंट्री में अलग अलग मीन्स फॉर्मूला जो होते हैं निकालने को। तो 1000 मेल पॉपुलेशन को टोटल मेल पॉपुलेशन को टोटल फीमेल पॉपुलेशन से डिवाइड किया और फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उससे क्या आ जाएगी, आप नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, इसमें फीमेल्स को बेस माना जाएगा एंड मेल्स को मतलब 1000 फीमेल्स के ऊपर अगर मेल्स ज्यादा होंगे तो 1000 से कम आए ऊपर आएंगे और कम होंगे तो 1000 से नीचे आएंगे। तो लेकिन जो इंडिया के अंदर है वहाँ पे मेल्स को बेस माना जाता है। तो इन इंडिया that one female population is divided by the male population and then it is multiplied by 1000। तो इसमें क्या आ जाता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स है उसकी पॉपुलेशन निकल के आ जाती है। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर फॉलो करते हैं। किसी जगह पे पर 1000 मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स को काउंट करते हैं, मतलब वो 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं। एंड कुछ कंट्रीज के अंदर वन मीन्स 1000 फीमेल्स पे कितने मेल्स हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूला हैं जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर वर्कआउट करते हैं, इनको अडॉप्ट किया गया है। Now, why means what do we come to know about the सेक्स रेशियो। जब सेक्स रेशियो हमें किसी कंट्री का पता चलता है तो हमें उससे क्या चीज जानने को मिलती है उस पॉपुलेशन के बारे में या कंट्री के बारे में। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द स्टेटस ऑफ द वीमेन इन द कंट्री। मतलब किसी जगह की सेक्स रेशियो से ये पता चलता है कि उस कंट्री के अंदर फीमेल्स का जो स्टेटस है, जो फीमेल्स का रहने का जो स्टेटस है, सोसाइटी में उनकी जो वैल्यू है, सोसाइटी में उनका जो रेस्पेक्ट है, उनकी जो एम्पावरमेंट है, उसका पता लगता है। इन द रीजन्स वेयर देयर इज द डिस्क्रिमिनेशंस इज रैम्पेंट, जहाँ देयर आर सम कंट्रीज इन विच द there is the discriminations, gender discriminations, means the females are considered less important than the male, or the male are the dominating or the decision making of the family and the society. So in such type of regions, means the bound to be unfavorable women, the conditions in such type of the countries or such type of regions are unfavorable for to the women। जहाँ पे सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पे वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वह फीमेल्स का कम होता है देन द मेन। ऐसे एरियाज के अंदर फीमेल्स कम, number of females is less than the men. In such areas, those where the practice or in such areas means these are the areas where there is the practice of the female foeticides, female infanticides, domestic violence against the women are prevalent, and means where the areas where the women are less than the men,
the such type of practices are found there. These are prevalent there. These are spread in the society, just like the female foeticide, female infanticide, domestic violence against the women. That's why, because there is the discriminations, means the gender discrimination, and that's why the सेक्स रेशियो ऑफ द वीमेन आर लेस, और द जो वीमेन के जो नंबर होती हैं पर मैन वहाँ पे कम होती है. One of the reason could be the lower social economic status of the women in these areas. And what is the reason? मतलब इस चीज के पीछे क्या रीजन है? वहाँ पे women का की ऐसी सिचुएशन क्यों है? उनका नंबर क्यों है? उनका स्टेटस क्यों है वहाँ? क्योंकि इन दीज एरियाज, जो ऐसी सोसाइटीज के अंदर जो विमेन होती है, उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस मेन से कम होता है. क्योंकि we know that in the earlier times women were not allowed, or there was the no culture of the women working. The women were used not to be working. It was the custom or the culture that women used to do the only household works. So because they did not work outside, they were not allowed to work as the men. That's why their social economic status was lower. क्योंकि उनका क्योंकि पैसा नहीं कमाते थे तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस कम होता था, सोसाइटी में वैल्यू कम होती थी. इस वजह से दैट इज द वन रीजन, because in such areas the social and economic status of women is lower than the men. You must remember that more women in the population does not mean they have the better status. It could be that the men, और ऐसा भी नहीं है कि किसी सोसाइटी या किसी कंट्री या किसी रीजन के अंदर ज्यादा विमेन है तो वहाँ पे विमेन की का स्टेटस बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है. इट कुड बी, ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि विमेन की वहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ विमेन ज्यादा इसलिए भी हो सकती है बिकॉज द मैन हैव माइग्रेटेड टू द अदर एरियाज फॉर द एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि ऐसा इसलिए किसी भी एरिया में विमेन की का नंबर इसलिए भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि वहाँ के जो मैन है वो काम के लिए किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल इन द rural areas where the men have migrated for the work for the employment to the cities. That's why the number of the females may be more than the men in the rural areas, because, and it is not natural, and it doesn't mean that if the women are more than so the status of the women is better. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मीन्स विमेन की संख्या ज्यादा है या जो औरतों की संख्या ज्यादा है तो उनका सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा होगा. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वहाँ के जो मेन है, जो मर्द लोग हैं, वह अपने काम की वजह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो गए, इसलिए वहाँ पे मेंस की पॉपुलेशन कम हो गई है. Now there is the one female has the natural advantages, but it is subdued, or it is it is cancelled by the social disadvantages. It's a quite important thing for regarding the status of the women. The females have the biological advantage over male, as they tend to be more resilient than males. Women are more resilient to the resilient means they have the more capacity to tolerate or the bear the something just like the pain and the other things, because they have the biological advantage, because they have to give the birth to the child, and that is the one of the most difficult task by in the world. But the women can do that. They can bear the pain, they can tolerate, or they can means वो उसको सहन कर सकते हैं. हर चीज को सहन करने की क्षमता फीमेल्स के अंदर होती है, मेल्स के अंदर वो नहीं होती है. इवन दिस इज द एडवांटेजेस with the women, but this advantage is cancelled by the social disadvantage and discriminations they face. लेकिन इस एडवांटेज को भी
सोशल जो डिसएडवांटेजेस है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है. दैट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम. So, because female has the natural advantage, but it is cancelled by the social advantages or the social status or the means the culture of the particular area. Now, if we talk about the sex ratio of the world, अगर हम पूरे वर्ल्ड के सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो it is 1000 means there are the 102 males per 100 females in the overall world. On an average the popular means that there are the 102 males and the 100 females in some areas, or in the some high, there are the some areas where the highest sex ratio in the world. The highest sex ratio in the world has been recorded in the Latvia. It is the name of the country, where there are the 85 males on the 1,100 females. यहाँ पे one in the this is the country where is the highest sex ratio has been reported. Means what 85 females, 85 males and 1,000 females. In contrast, इसके opposite अगर हम कतर की बात करें, there are the it's a big gap. There are 311 males per 100 females. It's a triple, means the number of the males are triple than the females. And you may know the reason. You may work out the reason. What may be the reason? Because in these countries, or in the Gulf countries, the females are not considered as equal to the males. They are means they do not have the freedom as the males. जितनी वहाँ पे मीन्स मेल्स को फ्रीडम है, उतने फीमेल्स को नहीं है. दे आर बाउंड टू द हाउस, मीन्स इन द मीन्स द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस. एंड the world pattern of sex ratio does not exhibit variations in the developed regions of the world. Means जो developed regions है, जो मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे ज्यादा वेरिएशंस नहीं मिलता, ऑलमोस्ट इक्वल मिलता है, एक जैसा मिलता है ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री में. द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर फीमेल्स इन 139 countries. In the world, there are total 139 countries in which the sex ratio is favorable for females. Means the 139 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल्स का सेक्स रेशियो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन द वर्ल्ड there are 72 countries in the world where the sex ratio is unfavorable for the females, as listed by the United Nations. According to the United Nations, there are total 139 countries where the female sex ratio is favorable, but there are the 72 countries in which the sex ratio is not good for the females, so it is unfavorable for the females. If we talk about the Asia, that Asia has the low sex ratio. In overall Asia, or on an average in Asia, the sex ratio is low. Sex ratio is low means the number of females are less than the men. जहाँ पे औरतों की संख्या मेल्स से कम है. Countries like China, India, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan have the lower sex ratio. These are the countries of the Asia, and these countries have the low sex ratio than the means low number of females than the males. So these are the in these countries the sex ratio is low, or they have the lower sex ratio. On the other extreme is the great part of the Europe. इसी के opposite in the Europe, the sex ratio in the most of the countries of the Europe, the sex ratio is very high. Where males are in the minority. Males are in the minority means number of males is
less than the females, including the Russia. The most part of the Europe, the females are number of females are more than the male. वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे फीमेल्स की संख्या ज्यादा है और मेल्स की संख्या कम है. The deficit of males in the population of the European countries is attributed to the better status of the women. और इसका रीजन जो ज्यादा फीमेल से ज्यादा सेक्स रेशियो होने का जो एक रीजन माना जाता है, that is the better status of the women, because in those countries or in those areas the status of the female is better and it is the good, they are equal to male. And it is also the another reason is that the male dominated out migrations to different parts of the वर्ल्ड इन द पास्ट. और जो दूसरा रीजन वो है कि इन एरियाज के जो यूरोपियन कंट्रीज के जो मेल्स हैं वो पहले किसी वर्ल्ड के दूसरे रीजन्स के अंदर माइग्रेट हो गए. दे हैव बिकॉज यूरो इन द अर्लियर टाइम द यूरोपियन कंट्रीज सेट अप द कॉलोनीज इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो व्हेन means the number of males, the more number of males were migrated to the other parts to their colonies to rule them out. So that is also considered to be the more better sex ratio in the European countries. Two reasons are there. वहाँ पे ज़्यादा बेटर सेक्स रेशियो होने का क्या रीजन है? एक तो वहाँ पे फीमेल्स का स्टेटस अच्छा है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है. दूसरा जो मेल्स हैं वो वर्ल्ड के दूसरे एरियाज के अंदर माइग्रेट हो गए हैं. और जहाँ पे सेक्स रेशियो लो होता है वहाँ पे उसका क्या रीजन माना जाता है? the status of the females in the society is not good, or it is considered lower than the male, and the way the practices of just like the female foeticides, the female infanticides, means the violations against the female, domestic violations against the women. तो ऐसी जगह पे females का रेशियो कम होता है. और जहाँ पे फीमेल्स की सिचुएशन कंडीशन सोसाइटी में अच्छी होती है वहाँ पे उसको अच्छा माना जाता है. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. Sorry, this is the end of the topic of sex composition, and now in the next we will study the Here's a reminder. age Start the structures of the recording of video population. class.